Okay, good morning, class. Today we will discuss the last topic of the chapter, that is island group of our country. As we know that we have two island group of our country and they are in Arabian Sea and Bay of Bengal. So they are Lakshadweep and Andaman and Nicobar. Okay, so we have to discuss them. Beautiful videos are available on the net, and simultaneously I'll show when I'll be taking online class. So, and after that in group you will see them. So this is the beautiful pictures queue of our country, the islands group of India. Let's see that islands you have already seen. India has a vast mainland, and beside this the country has two island groups, that is Andaman Nicobar and Lakshadweep. So Lakshadweep, we know that it is in the Arabian Sea, and just it is in front of it, close to the Malabar coast. Now you must know the Malabar coast. I told you the Malabar coast that is in Kerala, complete Kerala. This region का just इसके बिल्कुल पास में ही है. 300 meters का इसका मतलब यहाँ से distance है. ठीक है. So that is close to Malabar coast, and this group is island is composed of small coral island. इसका speciality जो है वो coral island है. ठीक है, ये coral island, coral stone से बना हुआ है. coral island इसको बोलते हैं. Earlier they were known as Lakshadweep, Minicoy and Adewan. In 1973 these were named the Lakshadweep. It covers small area of 32 square kilometer. Kavaratti is the island, is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has a great diversity of flora and fauna. Pitti Island, which is inhabited, has a bird sanctuary. देखिए थोड़ा सा इसमें वैसे भी जानेंगे आप, अगर वैसे कुछ वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा. पिक्चर में भी दिख रहा है जैसे स्मॉल स्मॉल आइलैंड हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. समवेयर बर्ड सेंचुरीज आर देयर, समवेयर ग्रेट फ्लोरा एंड फाउना वी फाउंड, समवेयर पीपल लिव, समवेयर दे कल्टिवेट द लैंड. तो ऐसे भी एक जगह पर रहते हैं, दूसरी जगह पर वो एग्रीकल्चर करते हैं. तो ये है मेन इसकी स्पेशलिटी, बिकॉज आइलैंड्स जो है वो अपने आप में छोटे छोटे पीसेस में स्कैटर्ड हैं. ठीक है. सो यहाँ पर कोरल से बने हुए. कोरल क्या होता है? कोरल इज वन ऑफ द स्पेशलिटी. वी नो दैट कोरल polyps are short-lived microscopic organism, मतलब छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, which live on the colonies, in the colonies, and they flourished in shallow mud free and warm water. warm water तो अपने आप ही होगा. we know that near to equator है, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, पानी का गर्म ही होगा, and they जो है उसी में वो ब्रीड अप होते हैं. एंड द secrete calcium, sorry, carbonate and the coral secretion, and their skeletons from the coral deposit in these form the reefs, and they are mainly the three kinds of barrier reef and fringing reef and atolls and the Great Barrier reefs. Australia is good one of the example. And first kind of the coral reefs and atolls are the circular or horse or shoe shaped of coral reefs. देखिए मेनली इसमें आपको सिर्फ ये बताया गया कोरल्स हैं क्या, लेकिन जनरली इफ़ आई टेल यू कि कोरल्स होते क्या है, एक तरीके का ये ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा मतलब कीड़े जैसे भी आप इसको कह सकते हैं, कि वो क्या होता है अपनी मरने के बाद डेड बॉडी जब उनकी होती है तो एक दूसरे पर चिपकते चले जाते हैं, जिससे वो क्या है हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मेन इसका ये इसका पीछे का थोड़ा स्टोरी है. ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और इसी से ही क्या है ये पूरा आइलैंड बना हुआ है. इसका मेन एग्जाम्पल जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, ग्रेट रीफ, जिसकी हाइट जो है वो एक ऐसा माउंटेन बैरियर है ऑस्ट्रेलिया में. यू कैन फाइंड आउट many pictures you can get on net, that is of more than 1400 meters का जो वो हाइट है. आप देखिए हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं उनसे भी ऊंची, मतलब वहाँ की वो ग्रेट बैरियर रीफ है. इट इज़ वन ऑफ द मेन अमेजिंग फैक्ट. ठीक है, आता है. So now you see that elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from the north to south. These are Andaman and Nicobar Islands, and they are bigger in size and more numerous scattered. ठीक है, बहुत ज़्यादा है ये,
पूरे जब फैले हुए हैं, बहुत काफ़ी नंबर में है। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। ठीक है, ये जो आपका साउथ में है इधर से, इसको अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान नॉर्थ का हुआ और निकोबार साउथ का हुआ। ठीक है, एलिवेटेड portion of submarines mountain, and these islands groups are the great strategic importance in the country, and there is a great diversity of flora and fauna and in the group of island too, and these islands lie close to equator, experience the equatorial climate, has the thicker forest cover। तो सबसे ज़्यादा variety diversity इसीलिए हमको देखने को मिलती है because they are very much near to equator region। and one of the amazing fact is there, India's only active volcano बैरन आइलैंड्स में जो अंडमान निकोबार में ही है, वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, सो when we come to the conclusion, we have seen the the variation in the physiographic feature of our country, but we cannot say that it is one of the main unification of our country। ठीक है, the detailed account of the different physiographic units highlands is unique feature of each region. It would however be clear and each of the country richer in its natural resources। The mountains are the major source of water। अगर हम कहें कोई भी, हम desert को neglect नहीं कर सकते, mountain के लिए नहीं कह सकते कि they are not in any use। every feature is very important and it gives a resource to country। that mountain are full of, they are called generally the water resources, source of water, and forest wealth, northern plains, they are granaries of the country, means the whole country they feed because the main source of cultivation is there and they provide the base for early civilization। The plateau is a storehouse of minerals। ठीक है, we know that many of the minerals we generally found in plateaus only, which has played a crucial role in the industrialization of the country। Many industrial belt we see in that particular region, so provide the sites of fishing and for port activities। Thus the diverse physical features land have immense future possibilities of development। So that's why in the early time India was used to call the golden bird। Why? Because we are full of resources, abundance resources we have in each and every shape if we discuss। So this was all about the chapter, so hope you understood and try to understand by the help of videos, read yourself, take the reading, do meditate, take out the points, write the points, make the notes, so that better you can understand the chapter। Okay, thank you, have a nice day।